जय जिनेन्द्र। आज का विषय है भगवान ऋषभदेव का जन्मोत्सव। चैत्र कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि के समय महादेवी मरुदेवा ने एक युगल संतान को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही चारों दिशाएं प्रकाश से जगमगा उठी। भिन्न भिन्न सुगंधित पवन बहने लगी। चारों ओर एक अनिर्वचनीय सुख का वातावरण निर्मित हो गया। महान पुण्यशाली पुत्र का जन्म होने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाली 56 दिशा कुमारियाँ आईं। उन्होंने पहले भगवान तीर्थंकर की माता को 3 प्रदक्षिणा करके वंदन की, फिर तीर्थंकर स्वरूप बालक की स्तुति की और उनके सभी प्रकार के स्तुतिका कर्म किए। उसी समय प्रथम स्वर्ग के अधिपति सौधर्मा शक्र महाराज को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हो गया है। शक्र महाराज तत्काल अपने विशाल देव परिवार के साथ वहां उपस्थित हुए। सर्वप्रथम उन्होंने माता को प्रणाम किया। हे रत्नकुशी धारिणी जगत माता, मैं सौधर्मा शक्र आपको नमस्कार करता हूँ। फिर शकेंद्र ने माता को सुख निद्रा में सुला दिया और अपने 5 दिव्य रूप बनाए। बालक को सावधानी पूर्वक अपने हाथों में उठाकर मेरू पर्वत पर लाए और उसका जन्म अभिषेक किया। इस महोत्सव में 64 इंद्र और अनगिनत देवी देवता सम्मिलित होकर उत्सव मनाते हैं। यह तीर्थंकरों का जन्म कल्याण उत्सव संसार में अद्वितीय उत्सव होता है। बर्थ सेलिब्रेशंस ऑफ लॉर्ड ऋषभदेव। On the 8th day of the dark half of the month of Chaitra, around midnight, healthy Marudeva gave birth to twins. This pious birth influenced the surroundings. The sky became filled with a soothing glow, the wind became fragrant, and the whole atmosphere became impregnated with unprecedented joy that was hard to describe. From all around came the 56 goddesses of Dakshas. They circumambulated the Tirthankar's mother and bowed before her. They also sang in praise of the child that was to become Tirthankar and then proceeded to perform post-birth cleaning rituals. At that instant, the king of gods of the Saudharm dimension, Saudharmendra Shakra, also came to know that the first Tirthankar has taken birth. He arrived with his large retinue of gods and bowed before the mother. O great mother, I, Saudharmendra Shakra, bow before you and offer my salutations. After the salutations, the mother was put to sleep. Saudharmendra created 5 look-alike bodies of himself. With one body, he carefully lifted the baby in his hands. With the second body, he took an umbrella in his hands and stationed the body behind the baby. With the third and fourth bodies, he took whisks and stationed these bodies on both sides of the baby. With the fifth body, he lifted his divine weapon, Vajra, and stationed himself ahead of the baby as a bodyguard. In this formation, the king of gods airlifted the baby to Meru mountain. There all gods, including their 64 kings with their consorts, ceremoniously performed the post-birth anominating rituals. This ceremony, properly known as Janma Kalyanak of a Tirthankar, is unparalleled in this world. Thank you for being with us. Have a wonderful day.